फ्रेंड्स, इस वीडियो सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने मॉडल्स के ऊपर कोडिंग करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा था, एक बार उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो हमारा जो था वर्चुअल एनवायरनमेंट का इंस्टॉलेशन था, फिर एचटीएमएल पेज को कैसे हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं, सेटिंग्स हम लोगों ने चेक किया, और कैसे हम लोग एक एचटीएमएल पेज को रेंडर करेंगे अपने सर्वर पे। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव सीन एंड वी आल्सो डिस्प्ले द फर्स्ट मैसेज। बट यहाँ पर अब क्या है, अब हम लोग को थोड़ा सा मॉडल वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि Django जो है एक कम्प्लीटली मॉडल मॉडल व्यू टेम्पलेट पर बेस्ड एक फ्रेमवर्क है। तो ये जो है मॉडल का क्या इसमें रोल है उसको एक बार समझते हैं। तो लिखा है क्या है कि मॉडल इज ए पाइथन क्लास दैट रिप्रेजेंट ए डेटाबेस टेबल। आप जब Django के अंदर काम करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस का यूज कर ही सकते हैं। तो एक डेटाबेस जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट Django के अंदर मिलता है उसका नाम है DB SQLite। तो उस DB SQLite का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉडल्स के अंदर पे जो हमारा कोड होगा उस कोड को हम लोग लिखेंगे, और उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज के ये वाले जो कंप्लीट कोर्स है इस पे हम लोग सीखेंगे मॉडल्स का कोडिंग कैसे होता है, एडमिन पार्ट को समझेंगे, और Django सेल क्या होता है, कैसे उस पे OMR का कोडिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपने कोडिंग सेक्शन में चलते हैं और एक बार देखते हैं कैसा हमारा कोड वर्क कर रहा है अभी। तो ये हमारा क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव है, और यहाँ पर हम बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग कोड एक बार हम लोग अपने सर्वर को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा सर्वर भी एग्जीक्यूट कर रहा है। राइट हियर पाइथन manage.py रन सर्वर, राइट। तो ये हमारा सर्वर है, सर्वर जो हमारा 8000 पोर्ट में रन करता है। एक बार उसको खोल लेते हैं, और जो हमने HTML पेज बनाया था अपने लाइब्रेरी के लिए, एक बार उसको रन करते हैं यहाँ पर स्लैश। सो ओके, सो हम लोगों ने अब तक इतना काम किया था। अब हम लोग जो फर्दर काम करेंगे वो होगा हमारे मॉडल्स डॉट पाई के अंदर पे हम लोग मॉडल्स से रिलेटेड कोड लिखेंगे। फाइन, तो चलिए आइए करते हैं, उस कोड को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर पहले मैं अपने सर्वर को बंद करता हूँ। फाइन, चलिए। और ये एडमिन डॉट पाई है, तो एडमिन डॉट पाई में मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं अपने मॉडल्स डॉट पाई के कोड को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, अब जो मॉडल्स डॉट पाई जो फाइल है उस पर पहले हम लोग जो लाइन लिखेंगे वो होगा हमारा ये, बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा फ्रॉम django डॉट db import मॉडल्स। जो हमारा ये जो db SQLite है, इसके इसमें ये क्या करेगा, टेबल्स बनाएगा, और उस टेबल्स के अंदर पे जो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एज पर दैट वो वहाँ पर कॉलम क्रिएट करेगा। तो एक लाइन यहाँ पर और लिखते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं क्लास। अच्छा, यहाँ पे जो हम अपने जो डेटाबेस में जो हम बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वो किस में बनेगा, वो हमारा 3 टेबल बनेगा। एक ऑथर के लिए सेपरेटली बनेगा, एक बुक के लिए सेपरेटली बनेगा, और एक पब्लिशर के लिए सेपरेटली बनेगा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इन तीनों को ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हो सकता है एक ऑथर है वो 2 तरह का किताब लिख सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है एक पब्लिशर है जो वो कई ऑथर की किताब को पब्लिश कर रहा है। तो लाइक इस तरह से हम लोग एक फॉरेन की का भी यूज करेंगे अपने डेटाबेस को बिल्डअप करने में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लास author एंड देन मॉडल्स डॉट मॉडल, ये आपको लिखना है, और यहाँ पर इंडेंसिएशन देना है, एंड देन यू हैव टू राइट। तो ऑथर का क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, एंड देन मैक्स length. Okay, so max length 15, I am giving 15 as a way. Now next what I am giving, that is the last name, right? So model जो author होगा उनका last name होगा last underscore name equal to models dot carefield, and max length that's same, I am giving 15. Okay, नेक्स्ट जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ वो बर्थ डेट लिख रहा हूँ ऑथर का। तो BIRTH बर्थ underscore date equal to, that is models dot date field, right। so ये एक मेथड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस ऑथर का मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवाऊंगा, वो रहेगा हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उस ऑथर का। तो उसको कैसे लिखेंगे, डेफ, तो एक लाइन और छोड़ दो, डेफ डबल अंडरस्कोर STR डबल अंडरस्कोर self, okay, and then it will return f self dot first underscore name, then
self dot last underscore name. ओके, सो ये हो गया हमारा ऑथर का, आपका जो ऑथर के रिलेटेड हम लोग को लिखना है, तो हम लोगों ने लिख दिया। अब इससे रिलेटेड एक चीज और हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो रहेगा हमारा टैब गेट बुक। तो उन्होंने अगर कोई बुक लिखा है तो वो ऑथर का हम लोग बुक भी ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, अभी इतना इसको स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पब्लिशर का लिखते हैं हम लोग पहले। तो पब्लिशर के लिए आ जाइए, हम लोग लिखते हैं क्लास पब्लिशर। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्लास ऑथर लिखा। अब उसके नीचे हम क्या लिख रहे हैं, पब्लिशर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लास पब्लिशर मॉडल्स डॉट मॉडल नेम इक्वल टू models dot char field max length 100. Okay, address equal to models dot char field max length, that is giving 255. Okay, and next I am giving that is the city equal to models dot char field and max underscore length 100. Okay, so next after that I am writing state province state province equal to model dot carfield models dot carfield max length 100, right? And after that I'm writing country equal to models dot carfield and max length 100. So this is the way of creating your models. So hope you are understanding. And then suppose if a publisher having some website also, so we can also give you a website equal to models dot url field. Okay, so and then from this publisher we are returning some string, that is def double underscore str double underscore self return dot self return self dot name. Okay, so these things will be written from here. And then we will write one more function over here, but so okay, so let it complete first. So dep formatted underscore address self, and then right here return f curly brace, that is self dot address, then uh, so self dot city, and then self dot state providence, and then comma self dot country. Okay, so like this way, suppose if you have a, if you are writing like ऐसा अगर आप लिख रहे हैं, टेबल है, इतने सारे एट्रीब्यूट्स है, हर एट्रीब्यूट्स को आप चाहते हैं उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेटेड एड्रेस का एक स्ट्रिंग रिटर्न रखा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एड्रेस, उसकी सिटी, उसके स्टेट प्रोविनेंस और उसकी कंट्री को रिटर्न फॉर्मेट में हम शो करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा आपका ऑथर लिखा, पब्लिशर लिखा, और एक क्या करते हैं, बुक के लिए बना लेते हैं। तो बुक के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्लास। तो अगर चाहे तो आप बुक के लिए ऊपर भी लिख सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, बुक के लिए ऊपर ही लिख देता हूँ, क्योंकि बुक जो है वो क्लास
book or model dot model, and then title equal to models dot care field, max length 200, right? And then author equal to models dot foreign key, right? So what should we do? Let's cut this part and take it to the down part, right? मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फॉरेन की बनाता हूँ। तो ये क्या होगा, बुक्स है तो बुक्स जो होगा वो हमारे ऑथर के साथ उसका मैं एक कनेक्शन बना रहा हूँ, तो फॉरेन की यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फॉरेन की करूँगा तो मेरा ऑथर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल डॉट कैस्केड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर आप उस ऑथर्स को डिलीट करेंगे तो उस ऑथर से रिलेटेड डेटाबेस के अंदर पे जितने भी किताब होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, राइट? तो ये इस तरह से रहता है। या बुक में अगर आप कोई डिलीट करते हो तो उस ऑथर से रिलेटेड अगर कोई चीज अगर और भी उसका नंबर्स होगा तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा ऑथर। फिर पब्लिकेशन डेट पे आ जाते हैं। पब्लिकेशन, क्योंकि बुक का पब्लिकेशन डेट होगा। पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन अंडरस्कोर डेट इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, राइट? ये हो गया हमारा पब्लिकेशन डेट, राइट? एंड देन वी हैव अ ISBN. So for the book we also have a ISBN number, right? So ISBN number equal to models dot care field, that is the max underscore length, and I am giving as a 17, right? So I am giving my ISBN number as a maximum length of the ISBN number is my 17, right? So publisher, अगर publisher भी है हमारे पास तो publisher के लिए भी हम कर सकते हैं publisher equal to models dot many. So एक publishers like a publisher can publish many different author books, right? So publishers, so I can write here many to many field, right? So many to many field, and I am giving here as a publisher, publisher, right? So I got here publisher, and then we are returning something from here, dap double underscore str double underscore, and then self. So return self dot title, and then okay, wait, def book underscore age self, that that will also return something, that is the today equal to date dot today. Okay, so book age. So here we are going to show the book age. So what will happen, we will do some calculation over here, like आज से लेकर उस डेट का पब्लिकेशन से कितना है, उसका एज कितना हो गया, 2 years और 3 years old book, right? Like this way. So return what I am doing here. So that book age self today equal to, and then we are writing here return today dot year minus self dot publication date dot year. Okay, so like this way we are getting the life of the day. So after completing this part you just need to save the file, right? So I have saved the file over here, and let me check it out, right? So this is my complete model I have written for my library project, right? So author, first I written the code for the author, then publisher, and then class book. So in the author part I also need to write one thing that I forgotten to mention there. So let's come to the author part and add here. So right here, like first name I am just returning here, and then birth date, and then the self first name, then full name, right? So if you wanted to write the full name of the author, that you can also write. So I am just writing here author full name. So uh, right here def full name, full underscore name, that is just mention self inside,
and then return f curly brace self dot first name and then curly brace self dot last underscore name. Okay, fine. So I have done my model code. Now after that, the next step I have to do, that is the migration, right? So next step I am going to do, that is my migration. Okay, so